What's up? Hello, namaste, salam alaikum, welcome back. So we are in Gyu. We are going back to Tabo now. We completely changed our plan, so Chandan will be joining us as well. Our idea is totally different right now. We found so many places that nobody even goes or nobody even knows about these. Go to the riverside or towards the river. She becomes Sherlock's for now. Don't worry. She's just looking at this view, taking the risk of falling from here and probably breaking her ribs, bones, limbs. अभी देखेंगे ये जानवर कहाँ जाती है. Let's see where the animal goes. When you show it, I'll tell you where I found it. She's like a snow leopard. A snow leopard doesn't know where it's going, but also sometimes dies. So guys, if we find the man, we'll see you back. If not, for now, bye. And that's Diksha for you. She couldn't find a way. Because safety is important. She went all the way from there to there, leaving the safety away, and now she's saying it's safe. Oh, like now it's not safe. There's not a safety, guys. Safety is everything. ये बनने गई बेयर ग्रिल्स और बन के आई ग्रिल. We got lost somewhere over there, and now we are going back. Thankfully, a localite, kind of a localite, is helping us go back at least to the road, to the river. No, we didn't make it to the river as well. We are going back all the way. Apple farms. I'll lose my way again if I don't keep up with them, so I'm going to just run. यहाँ से जाना और यहाँ बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ से फिर ऊपर चले जाने सीधा आपको हाईवे मिल जाएगी, सड़क मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Thank you, Tanzan. बाय. So
That was Tenzin, kind of a localite. Showed us the way. अपन अभी कहाँ जा रही? हाँ? This house which is heritage home. Okay. Apparently it's one. So apparently there's a house that's like some 100 years old. So we're going there. And finally we're back to the road. वहाँ पे रोड है, यहाँ पे दीक्षा है और यहाँ पे हम हैं. मुझे लगा ही था ये नहीं है हेरिटेज होम स्टे, ये गाय का वो है, उस लड़की को नहीं पता. Heritage home, no? It was a beautiful heritage home, Diksha. There is one, and we met one person who's kind of a localite, who said with 100% guarantee that this is a heritage home, but this is where cows live. So I had my intuition of not trusting her because she has not been here. She studies in Shimla, but we did trusted her. We did trust her, and this is not heritage home. I asked her, "Are you sure?" She said, "इस कहाँ पे नहीं, धनकर में होगा पक्का." मैं बोला सबने बोला है. Said, हाँ मेरी मम्मी ने बताया यही वाला होगा. Oh man, कोई नहीं. And she So we said reached. And she said last में कि वो इस गांव की है but उसको कुछ पता नहीं है. So it's okay. But I think there is a heritage home. Which was She not still the thinks. cow. Yeah, I really think because 4-5 people told me, and I don't think 4-5 people will go to a cow shed and they'll call it heritage home. That the possibility of happening that is, unless that 100 people, unless that 4-5 people had the same kind of mindset and they all think the cow home or cow shed is a heritage home. And I'm tired. अभी एक सेकंड इधर इसको पकड़, लोड जाएगा नहीं तो पूरा नीचे. हाँ पकड़ फिर मेरे. You don't have to. अब मैं कहाँ बैठूँ? It's better you sit in the back. अब ये नहीं it's okay. ऐसा कुछ नहीं है. तू पकड़ ना इसको एक सेकंड. मुझे बैठने को दिक्कत है. नहीं आप थोड़ा सा आगे हो. 1 करके ले जाएंगे. देख लो. चलो आप भी छोड़ो. मैं ना पकड़ी, मैं कहाँ से पकड़ूँ? मैं ये पकड़. हाँ वो पकड़ लो. चलो. So next ट्रिपल जा रहा है. अभी मैं अकेले हो रहा है. So yeah, finally we met like a big group. We made a big group by ourselves. All of them were single solo travelers, and they were 2 friends who came, and we were 2 friends, and there's another solo traveler. We all met together and we decided to go for a small trek here. I'll introduce you guys while on the trek. No worries. Beautiful day again. I mean, it's a little sunny, which is normal because it's kind of a summer for this place and rainy for South India and other places. But shoo, nice. Going for the first trek of Spiti Valley. I'm still in Tabo. This is my 9th day in Tabo. I should have been in Gaza or Langza or wherever by now, but I'm still in Tabo because I'm exploring every single place. I'm trying to find more and more, I'm trying to find more and more unexplored places in Spiti Valley so that it just doesn't, I just don't go to some touristy place and just come back, which I don't want to do anymore. I want to explore, so let's go.
I'm walking towards Lari, and then we'll go to the book. It's a small trek, around an hour and a half trek. Aside from these guys, they're from Rampur Bhushar, going towards Lari, around 3-4 kilometers away from here. Hopefully I find them before they leave me alone. So hopefully I reach there ASAP and start the trek, finish the trek easily and come back safe. And I'll see you on the top. Until then, bye bye. Finally reached Lari. So these are the guys I met. अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो भाई प्लीज. Sitanshu, Mohit, Divakar. Back to the story. Why I'm going to the book. So there's a small trek from Lari, just before the bridge. So there is a small monastery cum cave where a 90-year-old monk lives, and he's lived there for 45 years around. So we are going to meet him, and he looks like a 90-year-old, but sorry, he looks like a 70-year-old, but he's 90 years old. 95 years old. So we are going all the way, trekking all the way till up just to meet him, probably camp if possible, and have fun. So this is the trail, all rocky. This is my first trek after 2 years, so it's getting tougher and tougher step by step for me, because we're in a higher altitude as well. So trying my best. Hopefully I finish it safely. Let's see. दो पीढ़ी पुराना है बोलते हैं ना, दो पीढ़ी जैसे टुफुक. हाँ हाँ. और भी है डुबुक यहाँ पे, और जगह भी है. और जगह भी है टुफुक. टुफुक तो काफ़ी है. जहाँ पे भी कोई योगी ऐसे मेडिटेट करता था और एनर्जी है तो उसको आप लोग डुपुक बोलते हैं. हाँ जी. और आपकी भाषा में? हमारी भाषा में ने एम्बा. ने एम्बा. और डुपुक कौन सा भाषा है? डुपुक ये हमारे पीती भाषा है. ने एम्बा तिब्बतन भाषा है. उनको क्या बोलते हैं? मामे. मामे बोलते हैं. मैमे. मम्मी. मैंने जो अंकल मैमे बोलते हैं. उनको मतलब बोलते हैं ऐसे? नहीं बोलते हैं, मतलब उनको ऐसे बोलते हैं हम लोग ना. वैसे तो उनका नाम है. कौन जो बोलते हैं, जैसे वो दादा बोलते हैं वैसे. और आप वो जो बता रहे थे कि आपके गुरु जिनका जन्म, उसका क्या मतलब? गुरुजी यहाँ पर पहले यहीं पर थे ना. पहले जन्म ना, पहले क्या हुआ मतलब पिछले जन्म यहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया. उनको सिद्धि प्राप्त यहीं पर हुआ था ना. अच्छा. 2 गुरु थे, एक तो मेरे गुरु और उनके साथ एक और थे. एक जो लोसर वाले. हाँ, जो क्या बोलते हैं वो वहाँ से थे, ग्यू से. ना. हाँ जी. उन्होंने यहाँ पर मेडिटेट किया, उनको सिद्धि प्राप्त हुआ. वो तो बिल्कुल हो गया, इंद्रधनुष की तरह विलीन हो गया मतलब. अच्छा. हाँ. फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया? नहीं, उनका नहीं लिया. वो पहले गुरुजी ना, तो दूसरा जन्म लिया. जो हमारे गुरुजी है ना, पिन में उन्होंने दूसरा जन्म लिया. अभी उनका उम्र है 60, जो पिन में भी हमें मिलेंगे. तो उन्होंने आपको बताया कि मेरा पिछला जन्म यहाँ पे बीता. हाँ जी. छोटे में वो यहीं पर थे ना, जन्म लिया कि छोटे में उन्होंने 3 साल यहाँ पर
देखा उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, हाँ 3 साल में ही। हाँ जी। और वो जो लोसर वाले हैं वो उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, फिर उन्होंने अब जन्म नहीं लिया दूसरा। लोसर वाले हाँ उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने बताया कि लोसर नहीं, जू वाले, ग्यू वाले जू हाँ, उन्होंने ये बताया कि अब मेरा दूसरा जन्म नहीं होगा। मरते मरते बता के गए वो। हाँ जी, मरने से पहले ना, अच्छा, ऐसे बताते हैं ना हमारा तो। वो तो ब्लीन इंद्रधनुष की तरह, मतलब जायल अच्छा बोलते ये हैं बता हमारा। देते हैं होगा या हाँ, नहीं होगा, नहीं इतना होगा, बता के खुद जाते बताते हैं, हैं। हाँ जी। ढूंढना कैसे कहाँ है वो फिर आपका सिस्टम हाँ करता हमारा है। सिस्टम है। और कोई तो बच्चे में जैसे कि बोलने लायक हो जाता है ना, 3-4 साल हो जाता है, वो खुद बताते हैं कि मेरा ये ऐसा प्लेस है, मेरा ऐसी जगह है, मैं यहाँ पर पहले रह चुका हूँ, ऐसा बोल खुद बताते हैं। अच्छा, और ये जो नीचे है अभी तेंजिन जो बच्चा है वो कहाँ, उसका पिछला जन्म कहाँ बीता है? उनका यहीं ताबू में था पहले ताबू में वो आचार्य थे ना। अच्छा, हाँ टीचर मतलब वो थे और ताबू। कितने साल पहले उनका मृत्यु हुआ उनका अनाचार्य में? 5-6 साल हो गए होंगे। 13 में। 13-14 में होगा। अभी उनका उम्र कितना? 5 16 में हुआ था। हाँ 5। जो कल था नहीं छोटा बच्चा बता हाँ